Hi guys, good morning. Good morning everyone. Thank you for joining. I'm audible. Yes, sir. Okay, 1 second guys, just a minute. So guys, okay, anyone wants to talk about the TVS result which came up yesterday? Who have sent me? Sir, can I start? Yeah, yeah, Amit, okay. Okay, Amit, fine. Yes, sir. So TVS records profit of rupees 8.52 billion in quarter 4 2025. That is an effective jump of 76% year on year increase, beating analyst estimate. Okay, Revenue from op- yeah, go ahead. Revenue from operations stood up at rupees 9.5 billion from for quarter 4 2025. The reason was two-wheeler and three-wheeler sales, including exports, which grew by 14%, totaling to 1.216 million units in Q4 2025. Operating EBITDA reported was rupees 1.3 billion, stood at 12.5% for Q4 2025, increasing by 120 basis point from Q4 to 2024 of 12.3% of rupees 0.926 billion. EBITDA margin growth was primarily driven by factors like robust revenue growth and sustained cost reduction initiatives. For FY 2025, two-wheelers and three-wheelers sales grew by 13%. Total 4.7 million units were sold, in which motorcycles accounted for 2.1 million units, scooters ये कितना परसेंट हो गया? 1.904. कितना परसेंट हो Yes, गया? sir. ये कितना परसेंट हो गया? एक सेकंड सर, एक सेकंड, वो बता रहा हूँ सर. ठीक है, वो मोटरसाइकिल्स. लिखना चाहिए ना, वो लिखना चाहिए ना। सर, वो नहीं ना मोटरसाइकिल्स का हुआ सर 44.6%. हाँ तो 2 पॉइंट ऐसा लिखना चाहिए ना, 4.7 मिलियन वेयर सोल्ड, सो दैट इज 49 जो भी है। Next with 45. 50% approximate 45%, huh? 45%. और The cycle और contributes स्कूटर्स का हुआ 45%, huh? सर 40%. 45% motorcycles, 40% scooters, or rest 15% of three wheelers. Okay. The management expects scooter sales to increase due to convenience factor and widespread EV adoption, and they expect consumption to be driven by improvement in agriculture sector along with income tax slab increase and RBI rate cut in last 3 months. Yes, sir. Okay. Now it's Okay. done. So wait, I think overall, so guys, what we have seen is, that two-wheeler sales are increasing and exports have also contributed substantial growth. We have also come up with saying that because there is a demand from Latin America and the African countries, that is the reason, demand is increasing for two-wheelers as well as the export, sorry. And two-wheelers, we have seen that, TVS have increased on its two-wheelers. I think two-wheelers EV is the most which has been sold by TVS. And yeah, this ones we are coming up. I think there is nothing new that they have talked in the conference call. The reason just I thought that they will talk something about the EBITDA margins, but probably there is nothing specific about EBITDA. They are just talking about the cost control and things like that. So Yes, sir. probably this all things, if you read newspapers, things we already know. So when you write conference calls, highlights majority of the things you already know. That is the reason you're doing this, reading this news on a continuous basis. In the last workshop, we have come up with the number saying that okay, there is an increase in exports. Even our headings was exports increases and two-wheeler shine. So that was a major heading in our this automobile workshop as well. So things are easy to understand from a research point of view if you are continuously into this. I will say continuously reading news. So those who have not seen the Um, workshop, there is a video which is available for workshop in our files. So you can go and see the workshop video. There are 4 videos, 4 days. Because this week we will start with again that because on 1st May numbers will be out. So when numbers are out, we need to punch those numbers. Now with this week we will do the FADA numbers as well.
the retail sales numbers, because last time we had not done that, because that workshop was specifically only for press releases. So we have the press release this weekend. We will do about the FADA release as well. You know, how to punch numbers and how to get more detailed information about all those automobiles which are sold in India. And they usually give what has happened, what has increased, and why it has increased. The two-wheeler is the easiest sector to follow, but you need to follow it on a regular basis. Okay, auto sector, I will say. Okay, Sir, Dhruv. I have Huh, one doubt. sir. Sir, while evaluating TVS result, there was a difference of like 2 lakh units. Like my total of Q4 24 was like 3 lakh, and they have Mm. given 5 lakh something. That So will be total vehicles. Now, where are you looking at? Which uh, numbers are I you was looking I was looking for like total wise, and in the today's newspaper, it was given something around 5 lakh something. at? That is the overall sales of TVS. Now, it also includes three-wheelers. No, it was mentioned in a segment wise, like two-wheeler, motorcycle, scooter, like that. And what is the number that you have got? You have got. I have got Q4 24 3 lakh 3,000. Where you got that number Q4 from? uh from that Auto Pundits and No, no. So, that so Auto Pundits what is only domestic. It doesn't include exports. So, okay. what do you guys Okay. will be doing? So but sir in Maruti they also did include exports. They were also Samayak, Maruti only sells, TVS have only 2% coming from exports. Maruti has okay. 4% coming from exports. So, how will the numbers match? Okay, sir. Numbers will not match. No? Auto Pundit is only exports, only domestic. Maruti has CVs as well, commercial vehicles. Commercial vehicle numbers are not given in Auto Pundits. Yes, sir. TVS sells auto rickshaws as well. Auto rickshaws numbers are not given in Auto Pundits. So Three you should wheelers. match the Right. domestic numbers, not the total numbers. Okay, sir. Yes, sir. This problem happened means after your third class, it was have to go to other sites because you told know that equalization you should match always. No, so which number matches? I have specifically mentioned domestic numbers should match. Exports, the total numbers will never match. Yes, sir. Domestic also, domestic two-wheelers only will match, not even the domestic three-wheelers will match. So that is why ना वो होता है analysis कि when you are told to match numbers, वो numbers कहाँ से match हो रहे हैं पता होना चाहिए. You cannot match every number. क्यों डेटा है ही Yes. नहीं available. वो होता है available, हमको नहीं free available नहीं. Okay, sir. Okay. Okay. Dhruv, what do you want to say about your news on M&M and Hello, sir. Am I yeah, audible? good morning. Yeah, you're audible. Yeah. So Eminem wants to enter into electric bus market as it plans to do this by buying the truck and bus company called SML Isuzu for 555 crores to boost its position in light commercial electric buses. Okay. And it's SML Isuzu is working on developing electric buses using Mahindra's new EV platform. These buses will be launched in between April and June 2025 because M&M believes that its experience in EV will help make the electric buses plan successful. They say this will also reduce the cost and improve the product. Okay. Mahindra's current market in electric bus, like in electric cars and three-wheelers, they also want to expand into electric buses. So they have they have a very tough competitions like the big players like Tata Motors, Ashok Leyland, and Olectra. The e-bus market is small but growing. Currently, sir, in this year, India's e-bus market is still growing slowly. Sales are expected to fall to around 3,314 units in the financial year of 2025. The deal increase in Mahindra market share is light commercial vehicle segment from 5% to 21%. But their target is until the FY 2031
But by the coming year, they are like every year they have a target of 3% growth. Okay. And so the sales and loss of SML Isuzu is in FY 2025. They have sold like around 12,000 vehicles, but the profit fell from 53 lakhs in the late 2024 in their third quarter. And Okay. so the Mahindra wants to become the fourth largest player in the trucks and business for the market by FY 2031. So SML That's it. also sells electric vehicles? Mm. No, no, it Sorry? doesn't sell. No, sir. It doesn't Only sell. they want to like merge with Mahindra because Mahindra has a very good EV platform. The name Okay. of the EV platform is something. Hero Uh, V, Hero EV, yeah, no? Hero EV. yes, Okay. Okay, excellent. Okay, so they have taken the stake, no, in SML as well to increase yes, their market share in small CV yes, space, sir. correct? Yes. 3 to 5, 3 to 3.5. Okay. So guys, what I feel is, this electric buses, I think Ashish is not there in the class, but he used to always talk about electric buses. Sir, buses में ऐसा हो रहा है, there is a increase which is happening, काफी काफी छोटा है, and the share is quite low, and all the state transport government is planning to shift everything to electric. तो ये electrification तो हो रहा है probably, so ये this business, I will say through, it is not that lucrative business, but हाँ, something to talk about. यहाँ पे growth हो रहा है because buses usually we don't buy on a regular, we don't buy. So it is not a consumer, it is a B2B business. And when you deal with government, probably there is a problem of, the cash being coming up, so getting cash from the government. But still, this business is booming. Electric buses. Even Olectra is talking about it. Tata Motors is talking about it. Government is talking about it. So probably there will be an infra boost for this segment. Acha, second So thing. the sorry, sir. हाँ So sir. the government also has started like I stay in Mumbai, so I have seen like the BST. Majorly, they are in electric buses, and they are of I think so of Tata Motors or Ashok Leyland. I'm not sure about that, sir. But No, Olectra. major In of Mumbai, the there is Olectra. yeah, yeah, Olectra, yeah. So majorly the buses are of electrics. Yeah. So they have almost, so this is what they are trying to, change the entire infrastructure of all the cities into electric buses. So it will take time. But something to share about. Yeah, cash. Shashwat is right that there will be a cash flow problem with the government. But na thode bahut Ashish, there was one. I don't know. He's not there in the class today. But he used to talk about this electric vehicles. उसने कुछ पढ़ा था. And he was saying कि कोई schemes है जहाँ पे ना people will Mahindra will get money on time या ना because of early release of funds ऐसा कुछ था. But see, the Mahindra, Tata, Ashok Leyland don't have cash problems. The cash problem is only with Olectra and the JBM Autos. That company might impact. ये तो क्या है ना, it is just that you be in the good books of government or you get the share of government because the orders will be huge. But हाँ, overall वो महिंद्रा का तो कितना ही part होगा. It is like, but it will not impact its total bottom line. But the question is this this commercial vehicle segment, they have acquired this. So I assume that because of the infra boost, you see, कल ही एक था कि you will reach from Nashik to Mumbai in 2.5 hours. ऐसा कुछ with the Samriddhi Mahamarg. So can I say with the road development in India, the logistic will also grow? अगर मुंबई से दिल्ली आने को तुमको 10 घंटा लग रहा है, जो पहले 25 घंटा लगने का, तो probably गुड्स ट्रांसफर विल बी, जो भी सिटी में ट्रांसफर करना है, might increase. So this is a long term story for India. I feel this is a long term story for India. Not to know how will it pan out. वो तो हर every we have to track it every year, every quarter. But ये सब जो acquisitions हो रहा है, I feel it is looking at that point of view that when the infrastructure in India grows. Currently, when this government, now this our election was somewhere around 2025, now correct? Now 4 years. 4 years from here, there will be an infra boost in India. Because before that, from 19 to 2025, what had happened? You might have seen a lot of infrastructure projects in India were started, that Atal Setu Bridge, maybe the Samruddhi Mahamarg, maybe, that corridor of Delhi, Mumbai, and Delhi, Kolkata. So all this corridor is starting. Probably in the next 4 years, we might see all this uh, roads being opening up. And when these roads open up, probably infra will have a boost.
So I'll say this is a long-term story. So Ashok Leyland, if you want to specifically pay on the commercial vehicle part, Ashok Leyland is the stock to look at. कि इसमें क्या हो रहा है आगे. तो जस्ट ट्रैक दो स्टॉक ऑन अ डेली बेसिस कि वो स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रहा है. वॉल्यूम्स आ रहे हैं क्या, या नो इज द स्टॉक मूविंग अप, और सेल्स नंबर्स आ रहे हैं क्या. So I feel it's a long-term story. Maybe 4 years from now, in the next uptrend, in the next when in the next rally, probably Ashok Leyland should do good. Okay, Mithilesh. Okay. Uh, Gaurav, what do you want to talk about Maruti? Yes, sir. Yeah. So Maruti Suzuki is going to launch a brand in India called e-Vitara. It will be its first electric SUV and anticipated to launch soon. And also the production will commence at Gujarat plant. The plan Okay. is to export to over 100 countries. The main reason to launch this brand is to claim the market share because Maruti Suzuki market share in India has declined from 50% to 40% due to increased competition, especially in SUV and EV segments. So, eVitara is part of the company's strategy to regain its dominance and also a strategic collaboration with Toyota. The eVitara is built on the Hairtech E platform, which Toyota co-developed. Maruti Suzuki will supply the eVitara to Toyota, which will market it under its own brand. That's it. Okay. So Ajay, तो ये okay fine. So what happened ना गौरव? So like we do the auto analysis. तो हमको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी गाड़ियाँ बिकती है इंडिया में, कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार में बिकती है. इफ मारुति कम्स, व्हाट विल बी द मार्केट, मारुति का मार्केट शेयर कितने से बढ़ सकता है. एंड व्हाट इज द Yes, sir. कैपेसिटी यू सेड फॉर द वॉल्यूम कैपेसिटी. व्हाट वाज द वॉल्यूम Uh, कैपेसिटी यू सेड. सर ये मैंने बस बोला कि ये मतलब उसका मार्केट शेयर प्लान, हाँ. 50 to 40% डिक्लाइन हुआ तो है। कैपेसिटी इधर की बात और करें. So now कैपेसिटी तो here, just find you have to find what is the capacity of Maruti to build e-Vitara, कि कितना कैपेसिटी ओके से वो ओके बना ओके सकता है वो. एक एक गाड़ी ऐसा नहीं होता ना कि मारुति विल कंटिन्यूसली कितना भी बना सकता है. कैपेसिटी होगा, हाँ हाँ क्योंकि हाँ करेंटली दे आर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है उनका मारुति का. तो ये ई विटारा यस के लिए कितना है, जस्ट गूगल इट, अगर मिलता है तो देख लेना कि कि मारुति ईवीज के लिए कितना कैपेसिटी कर रहा है, क्योंकि दे आर ऑल्सो कमिंग विद 2-3 मॉडल्स इन द फ्यूचर. तो उसके लिए उन्होंने कैपेसिटी यस बाजू में सर रखा होगा कि ये प्लांट से वीवी बनाएगा ऐसा. ओके सर ओके. Sir, can I add something to that? या या श्योर. Yes, Maruti is has opened a Kharkonda greenfield plant in a recent quarter. The capacity of that plant is around 250,000 units. करेक्ट. And Maruti is also planning to launch a new SUV. Its name it has not announced, but it is planning, as he told, it wants to regain its dominance. या आई थिंक टू So थ्री. अच्छा, yes, एसयूवी, हाँ, इट इज आल्सो लॉन्चिंग one आइस SUV वर्जन, also, नॉट द ईवी, आइस वर्जन है. ICE version only. या करेक्ट. Yes. दे आर आल्सो लॉन्चिंग. दे आर आल्सो कमिंग विद 2-3 मॉडल्स ना. द मेजर वाज ये जो ईवी में कर रहा है उसका कैपेसिटी कितना रखा है वो लोग ने बाजू में, बिकॉज सर ये 2 उन्होंने लाख 50 में पूरा का पूरा नहीं होगा आइस. ऐसा है. कॉल में ये मेंशन किया था कि इनका जो नया प्लेटफॉर्म है वो इट इज मोर फ्लेक्सिबल लाइक EVs are comparatively heavy than ICE अच्छा. cars. So management mentioned in the call that कि ये new platform is very flexible. Like it will be able to produce both ICE vehicles and EV vehicles. ओके. ओके. Yes. Yes. या दे आर कमिंग अप विद मॉडल्स, आई थिंक. वही अप्रॉन्स, आई एम सेइंग अप्रॉन्स, एंड ये भी कर रहे हैं वो. वैगनर आल्सो दे आर लॉन्चिंग हाइब्रिड मॉडल्स में. Bronx, Yes. Wagoner, Swift is what they are Yes. launching again. Yes. Subash? सर Yes, sir. बट Adding ऑन on कॉल to में उन्होंने ऐसा बोला नहीं कुछ भी हाइब्रिड्स के लिए. उन्होंने कहा अभी तक हाइब्रिड का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा.
नहीं नहीं, Yes, कितना बड़ा न्यूज़ है ऑटो management ऑटो was पंडित पे। not so optimistic about hybrids in the con call. Like someone asked them about hybrids, and he was like, "हाँ ठीक है देख लेंगे वैसे." हाँ तो मारुति का ये एक है। अच्छा, तुमको अगर बोलो ना, मारुति हाइब्रिड हैज बीन टेस्टेड इन इन ऑन रोड्स, वो उसका रोड टेस्टिंग चल रहा है। तो ये सब न्यूज़ मुझे कैसे पता चला ना, व्हेन यू फॉलो दिस ऑटो पंडित, रश लेन या ऑटो कार शो है ना, वहां पे ये सब न्यूज़ आता है। तो अब ये मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने बोला है दे आर कमिंग अप, तो ऑब्वियसली टाइम होगा, बट टेस्टिंग चल रहे हैं, यू सी ऑन द रोड, तो दैट इज वाई बाकी के भी न्यूज़ है ना, वो भी कभी कभी पढ़ने होते हैं, बिकॉज आई फॉलो ऑल द पेजेस ऑफ ऑटोमोबाइल। तो वहाँ पे एक रश लेन होता है, एक रश लेन करके एक पेज है दैट आई फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। तो वहाँ पे आया था कि स्पॉटेड, न्यूज़ में भी कितने बार आता है कि मारुति इज वर्किंग ऑन हाइब्रिड मॉडल। अभी क्यों है ना, ये न्यूज़ कम है, कॉन्फ्रेंस कॉल पे नहीं आता, बट न्यूज़ में काफी बार आ चुका है। तो कैसा ना, देर इज माइल्ड हाइब्रिड एज वेल, समथिंग कॉल्ड माइल्ड हाइब्रिड, नॉट द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो ये सब माइल्ड हाइब्रिड में निकल रहे हैं, बिकॉज ग्रैंड विटारा, सॉरी वो ब्रीजा भी माइल्ड हाइब्रिड है। ब्रीजा, इफ यू नो, ब्रीजा भी माइल्ड हाइब्रिड कार है, स्ट्रॉन्ग भी आता है उसमें, माइल्ड भी आता है। तो इफ यू जस्ट गूगल इट ना, गूगल करना कि तुमको मिल जाएगा, पांच हिस्ट्री में से न्यूज आया मारुति के, ये कि मारुति इज टेस्टिंग देयर माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल्स। इसमें फ्रॉन्क्स है, फ्रॉन्क्स इज द वन पार्ट, एंड आई थिंक वैगनर भी है। हाँ सर, वो न्यूज़ अभी देखा मैंने, ई विटारा हम्म, विद वैगनर। हाँ ई विटा वैगन। दे हैव आल्सो मेंशन 70,000 ईवीज विल बी प्रोड्यूस, ऐसा बोला है क्या हाँ मारुति ने? सर, हाँ सर, 70,000। मैं उन्होंने बता बोला दूं। था कि ओके। 70,000 टीवीज आएगा, लेकिन मोस्टली उनका एक्सपोर्ट का ही एक्सपोर्ट में डिमांड है, होगा, हाँ। बहुत कम एक्सपोर्ट पे। डोमेस्टिक। हाँ, इंडिया में तो ईवी का डिमांड अभी तक तो है नहीं। ओके, सुघोष, हाँ। तुम्हारा न्यूज़ अ, कहाँ पे था, तुमने डाला है वो, वेयर वाज दैट न्यूज़? वो इकोनॉमिक टाइम्स में था सर, ईटी। अच्छा, 18। अच्छा, ओके। सर कौन सा वाला, मारुति वाला? नहीं नहीं, तुम्हारा जो तुमने दिया ना रिटेल वाला। वो रिटेल, रिटेल हाँ का, एक सेकंड हाँ। सर, एक सेकंड। सर रिटेल रिलायंस इंडस्ट्री वाला। नहीं, इसमें रिटेल रिटेल इंडस्ट्री ग्रो एट 6% ड्रिवन बाय फूड एंड ग्रोसरी क्यूएसआर सेगमेंट। सुघोष, जस्ट लिखा था या आर्टिकल पढ़ा कुछ? सर मैंने बिजनेस लाइन पे, एक मिनट सर देख रहा हूँ। हाँ ओके। सर बिजनेस लाइन पे पेज नंबर 7। तो गुड न्यूज़, मतलब जो हम देख रहे हैं वही आया ना वापस। राइट। अह, फूड एंड ग्रोसरी एंड क्यूएसआर सेगमेंट। तो 7 पे तो सर नहीं है। बता दूँ ये न्यूज में? क्या हुआ, इधर है, 7 पे तो नहीं है। ये न्यूज बताओ। हेडलाइन क्या, अच्छा इधर है, हाँ ओके, मिल गया, ये वाला ना, रिटेल इंडस्ट्री टू क्लॉक। हाँ पेज सुघोष नंबर तुम 5 पे सर। 5 हाँ पे, यही। हाँ हाँ, ये आई थिंक 7 हाँ लिखा है वो, ये मैं थिंक वाला, इस पे पेज ये पे है वाला वो, हाँ ठीक है। पेज नंबर 7, हाँ राइट, ये हाँ वाला है। हाँ, सुघोष या टेल मी। Yes, sir. Retail industry grows 6% in March, driven by fast food and grocery and QSR segment. So the fast food and grocery segment is the top in that, which has 11% year-on-year growth. QSR segment grew 9% in March, and this is due to the retailers maintain a cautious yet steady outlook, and there is no decline in consumer spending. So apparel and clothing has increased 6%. Furniture, beauty, wellness has increased 5%. Sports increased 4%. Consumer durable and electronics increased 3%, and footwear increased 2%.
And looking to geography, north and western region has a growth of 8%, and eastern and southern states have the growth of 5%. So they want to say that the consumers are continuously spending on aspirational and innovative products, though the discretionary spending shift across categories, and therefore one category is not growing steadily. Okay, okay. Yeah. But what I feel is overall, when you have said that, the apparel is posting a good growth. Yes. So, trend, I've seen, trend recently, trend, ABFRL, Raymond, they have seen a good growth in this. Why? I will say why. It is because of the increase in tourism. कि जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है वैसे ना, when you go out you try to have new Right. products, वो एक रीजन है. आई थिंक फुटवेयर इज व्हाट आई सी दैट इट इज लैगिंग, क्योंकि फुटवेयर में कंपटीशन भी काफी आ गई है एंड पीपल Right. वांट सम डिफरेंट थिंग व्हिच इज नॉट देयर. मतलब आई वाज हैविंग मेट्रो ब्रांड्स फ्रॉम सो मेनी इयर्स, बट प्रोबेबली व्हाट आई सी इज ना, वहाँ पे मुझे कुछ ग्रोथ ही नहीं दिखता है, बिकॉज एक तो ओवर एक्सपेंशन हो गया एंड देयर इज नथिंग न्यू. whenever I go to store वही सेम शूज होते हैं. लेट्स से आई हैव 3 pairs ऑफ मेट्रो शूज, वो खास मैंने रिसर्च करने के लिए लिए थे, पर उसके अलावा मुझे Mm-hmm. और कोई मिलता ही नहीं है. आई वांट टू बाय ना कि अरे कुछ नया दिखाओ मुझे, तो वही है, सेम ब्लैक शूज है Saturation आ एंड ऐसा है, हाँ सैचुरेशन है. तो वही इफ गया. यू गो फॉर स्पोर्ट्स स्टोर, तो स्पोर्ट्स स्टोर्स में यू फाइंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. बट वापस आई गो टू स्केचर्स, आई गो टू तुम्हारा फिला, तो सेम घूम फिर के सेम प्रोडक्ट्स दिखता है. तो एज Right. यू राइटली सेड ना कि दे वांट इनोवेशन, इवन आई फील इट कि आई वांट इनोवेशन. सेम सेम मेरे पास एक शूज है, वापस मैं सेम शूज क्यों लूं if it's not Right. giving me something different, ऐसा. Yes. तो और वो क्या लिखा था, आई डिडंट रेड दिस न्यूज़, और क्या है. इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल भी सिर्फ फ्लैट है, 3% ही है सर, तीन वो भी परसेंट थोड़ा अच्छा. लो ही है. कंज्यूमर ओके. वही अगेन देयर इज नो इनोवेशन ना. सैमसंग के प्रोडक्ट सेम है, एप्पल के प्रोडक्ट सेम है. राइट. तो दिस इज द सेम मोबाइल थिंग which is going में on भी into इतना autos as well. इनोवेशन. या. I will link this to the auto. Retail also comes as a part of auto, थोड़ा बहुत, not exactly, but वो भी B2C सेगमेंट ही है. तो ऑटोज में भी अभी यही हो रहा है कि देयर इज नो इनोवेशन इन अ कार. लेट्स से आई हैव अ कार हु हैज अ सनरूफ, उसमें एडैस सिस्टम है, ठीक है, एयर बैग्स है और वेंटिलेटेड सीट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज डिफरेंट, अभी गाड़ी में नया क्या आ रहा है. अभी एनीवन. इसलिए मतलब इफ यू बाय एन ग्रुप XUV 700 उसमें सब कुछ है. सब कुछ है. राइट. राइट. तुम्हारा पैनोरामिक सनरूफ है, तुम्हारा वो एडीएस वेंटिलेटेड लेवल 2. सीट्स है, वो एडैस लेवल 2 है. नाउ व्हाट इज डिफरेंट, नाउ व्हाट आई फील डिफरेंट इज द हाइब्रिड. भाई पेट्रोल हाइब्रिड. माइलेज तो ज्यादा दे, कम गाड़ी कम से कम, सब फीचर राइट. तो है, बट अभी कोई प्रॉब्लम है माइलेज का, that महिंद्रा माइलेज नहीं देता, ऊपर से डीजल राइट. है, तो वो एक इशूज है. और दैट इज व्हाट द इनोवेशन इज, करेक्ट. सो गाइस व्हेनेवर यू सी सम इनोवेशन ना अराउंड यू, तो ध्यान रखना दैट इंडस्ट्री विल ग्रो, बस पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर इनोवेशन. ये मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ कि मेरा जो कंजम्पशन पैटर्न है, आई फील द सेम थिंग, ना भाई इनोवेशन नहीं है. इफ आई हैव मनी ना, तो सी आइदर आई विल गो फॉर लग्जरी देन. ठीक है, मेरे को ना अभी जैसे मेरा आई हैव एन XUV 700, तो वो सब कुछ है उसमें. अभी मुझे अभी नई गाड़ी लेनी है तो मैं क्या लूंगा. व्हाट डू यू थिंक, विच कार विल आई बाय. ओके, XUV 700 कॉस्ट लग्जरी. अराउंड 30 lakhs. राइट. व्हाट अभी टू लाख, नेक्स्ट तो फिर 50 लाख के रेंज में ही सर. 50 लाख के लगा, एंड आई विल गो लग्जरी. फॉर टूवर्ड्स अ लग्जरी वन, की चलो मर्सिडीज लेता हूँ मैं, या चलो ऑडी. ऑडी लेता हूँ. वही होगा ना, क्योंकि सब कुछ है, सब कुछ तो मेरे को मिल गया, अभी क्या बचा मेरे को ये मिड सेगमेंट में. तो दैट इज व्हाई दैट लग्जरी सेगमेंट इन इंडिया इज ग्रोइंग. एस्पिरेशनल बायर, जैसे कि बस राइट. आई कैन स्ट्रेच माई लिमिट टू नो टू 50 lakhs, 50-60 lakhs, एंड चलो एंट्री लेवल मर्सिडीज तो आ जाएगा. तो ऐसा होता है कि मर्सिडीज में भले सनरूफ नहीं है, बट मेरे पास मर्सिडीज है ना, वो बड़ी बात होती है. वही एस्पिरेशन. एंड भले दैट मर्सिडीज इज स्मॉलर देन द XUV 700, चार ही लोग बैठ सकते हैं गाड़ी में, बट स्टिल आई गो एंड बाई इट. तो वो दैट इज द प्रीमियम सेगमेंट ग्रोथ दैट वी आर सीइंग इन द कंट्री. इंडिया के डेमोग्राफिक में ऐसा हो रहा है. तो द पॉइंट यू सी समथिंग गुड इन योर स्टोर अक्रॉस, बाजू आजू बाजू में देखना कि अगर कुछ नया हो रहा है, दैट इज द स्टॉक, दैट इज द सेक्टर टू लुक एट. जस्ट फाइंड आउट व्हाट न्यू इज हैपनिंग. और इज FMCG तो है ही, पर FMCG में भी नया हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग, वो इनोवेशन हो रहा है. मिनिमलिस्टिक और मे बी ब्यूटी ब्यूटी सेगमेंट में, स्किन केयर में, दैट HUL आल्सो सेड कि वो एनर्जी UV8 ड्रिंक्स. एंड UV9 के रेस कुछ अलग अलग है, तो तुमको अलग स्किन केयर चाहिए. हीट बढ़ रहा है इंडिया में, अगर हीट बढ़ रहा है इंडिया में तो प्रॉब्ली स्किन केयर भी बढ़ेगा. एंड प्रॉब्ली वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में AC, कूलर, फैन, यही बढ़ेंगे.
एंड एसीज में देखो, आज वो इफ यू सी द आईपीएल, वो ऐड आता था वोल्टास का। कल ही था, आई वाज वाचिंग अ मैच यस्टरडे, तो वोल्टास के एड्स आ रहे हैं। एंड वो कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बता रहे हैं कि अभी मेरा एसी इज साइलेंट, ऐसा काफी साइलेंट है। यस्टरडे देयर वाज, ये Xiaomi ने भी एक एसी लॉन्च किया है। इफ यू read द न्यूज, Xiaomi हैज लॉन्च्ड वन एसी। बोलता है कि पोर्टेबल एसी है, तो कुछ बोल रहा है वो। या मारुति Innovation, अनाउंसिंग innovation is must. इनोवेशन इज, तो वही क्योंकि आफ्टर कोविड द डिमांड इज पीक्ड आउट। Right. द डिमांड इज पीक्ड आउट, तो डिमांड को अभी ग्रो होने को क्या चाहिए, तो है ना, आइदर इट विल बी अ स्टैग्नेंट, कि काफी साल डिमांड आ ही नहीं रहा है, इंडिया गो इनटू रिसेशन फेज, या फिर है ना स्लो ग्रोथ फेज, एंड देन देयर इज अ रिकवरी अगेन आफ्टर 3-4 years। या फिर नो, यू टॉक समथिंग अबाउट इनोवेशन, कि नया क्या आ रहा है मार्केट में। तो करंटली आई फील इट इज नथिंग। तो बी इन द सेफ सेक्टर लाइक एफएमसीजी, वो तो आने ही वाले लोग, कुछ भी हो, पीपल आर गोना बाय। फैशन है, बट फैशन में ट्रेंड का एक नया फैशन आया था कि भी वो फास्ट फैशन थी। नाउ वी आर गोइंग इनटू लग्जरी फैशन। तो ट्रेंड का भी ग्रोथ हो चुका है, कि बहुत बढ़ चुका है। नाउ व्हाट इज नथिंग, ये तुम्हारा है। व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज, थिंक ऑफ अ सेक्टर जो हम यूज करते हैं, नॉट वो B2B में मत जाना। द सेक्टर्स दैट वी आर यूजिंग, इसमें कौन से सेगमेंट में ग्रोथ हो सकता है। इफ देर इज नो ग्रोथ, देर आर टू थिंग्स टू रिसर्च। ग्रोथ नहीं है तो फाइन, बट ऐसा कौन सा कंपनी दूसरे को compete कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, महिंद्रा इज टेकिंग ओवर टाटा मोटर्स। ग्रोथ तो नहीं है, बट टेक ओवर कर रहा है, ऐसा है। जितना टाटा मोटर्स के ग्रोथ, टाटा मोटर्स इज डी ग्रोइंग, महिंद्रा इज ग्रोइंग। तो ये दिस इज ऑल्सो इज कॉल अ ग्रोथ। वही महिंद्रा वही बात कर रहा है मार्केट शेयर लेने की। तो महिंद्रा इज टेकिंग, सी, आई विल से इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 5%, दैट इज स्टैग्नेंट, बट महिंद्रा इज ग्रोइंग एट 10%। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का मार्केट शेयर ले रहा है। तो टॉप लीडर्स तो यहाँ पे ग्रो नहीं होंगे। व्हाट विल ग्रो इज द स्मॉलर प्लेयर। एंड हाउ विल दे ग्रो? एक दूसरे का मार्केट खा के। This is what the equity analysis goes about. Is when you talk about stock pick, ये रिटेल का आया तो इट वाज अ गुड थिंग, कि दिखा तुमको। गुड वन सुगोश, आई मिस आउट इट कंप्लीटली। Thank you, sir. प्रीमियम कार का सेल्स, गौरव, प्रीमियम कार का ऐसे नहीं मिलता है, बट यू गेट मर्सिडीज लग्जरी कार का आता है। मतलब मारुति में ऐसा नहीं मिलेगा कि, वो तो दिखा ना, ऑटो पंडित में मिलता ही है, तो यू फाइंड आउट कि कौन सा प्रीमियम मॉडल है। बट हाँ, मर्सिडीज और इसका सब वो फाड़ा केस में आता है। विल डू दिस वीकेंड, विल टेल यू वेयर टू गेट दैट डेटा। हाँ, द नील, द सेम थिंग वी आर डूइंग ना। व्हाई आर यू पिचिंग अ स्टॉक, व्हाट इज द पर्पस? उसके लिए पहले यू नीड टू हैव डेटा, वो सेशन लेके नहीं होता है। व्हाट आई टोल्ड टुडे, इट इज आल्सो पिचिंग, स्टॉक पिचिंग। यू टेल मी। ओके नील, अनम्यूट, यू टेल मी, मैंने क्या बताया अभी? Hello, am I हाँ, audible? या नहीं, या टेल Yeah. मी व्हाट आर द नहीं थिंग्स आई नहीं, टोल्ड यू। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये एक पार्ट हो गया। पर उन्होंने अगर डिटेल में पूछा कि इफ यू आर पिचिंग अ स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 3 years व्हाट डू यू सी, या अगर ऐसा कुछ पूछा, आई एम नॉट श्योर इंटरव्यू में क्या पूछता है वो, पर नहीं, अगर ये मैंने अभी पूछा क्या तो। बोला, व्हाट आई सेड दैट इनोवेशन, करेक्ट। करेक्ट, हाँ। लेट अस से, मैंने एक आंसर भी दिया कि वोल्टास इज डूइंग सम इनोवेशन, करेक्ट। यस। मैंने बोला ना, आईपीएल में आ रहा है वो, कुछ एसीज में कुछ स्लीक एसीज बना रहा है, जस्ट लाइक साइलेंट एसीज, करेक्ट, दैट्स अ पार्ट ऑफ इनोवेशन। So now on this, assuming, so why I talk about voltage? Why are we talking about air conditioners? आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, पर क्यों? हम अभी बात तो कर रहे हैं सीजन ना, एक है, गर्मी बढ़ रही है। सेकंड। हम बोल रहे हैं हाँ, ना, गर्मी सो बढ़ हाँ, रही है इंडिया में। सीजन सीजन का इशू है, और नहीं नहीं, मे सीजन का बी। इशू नहीं है। दैट डे ना, समवन टोल्ड ना कि गर्मी बढ़, इंडिया में टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2% एवरी ईयर, एवरेज टेम्परेचर इन इंडिया। तो इससे क्या होगा? प्रोबेबली, और सेल्स तो बढ़ेंगे। नहीं, गर्मी बढ़ेगी इंडिया में, करेक्ट। हाँ, गर्मी हाँ, बढ़ेगी और गर्मी बढ़ेगी। सेल्स भी बढ़ेगी। तो कहना से दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, कि मैं ट्रू। वोल्टास पे आया कैसे? आई टॉक्ट अबाउट कि गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है इंडिया में, एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर में तुमको एसी चाहिए होता है, प्लस वो आई थिंक ये भी रोज आने का तुम्हारा, डार्क स्टोर्स, इंडिया में डार्क स्टोर्स बढ़ रहे हैं, करेक्ट। डार्क स्टोर्स बढ़ रहे, तो डार्क स्टोर्स में यू नीड टू हैव द फ्रीजर्स इन दैट।
ये भी न्यूज़ था, राइट। हम पढ़ रहे हैं ना, डार्क स्टोर्स बढ़ रहे हैं, हाँ, यस, क्यूएसआर बढ़ रहा है इंडिया यस, में। यस, यस, दिस इज सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट, फर्स्ट इज गर्मी बढ़ रहे हैं, सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक में बी टू बी में चेंजेस हो रहे हैं, तो प्रोबेबली ये सब चीज़ों को एसी लगेगा। दैट इज यस। वाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट एसी। ये हो गया तुम्हारा, पहले स्टॉक पिच के पहले इंडस्ट्री पिच आता है। ओके, यू डोंट टॉक अबाउट अ स्टॉक। ओके, तो लेट्स से इवन का स्टॉक हो गया, वोल्टास इज माय टॉप पिक। बस उसके बाद क्या चालू करते हैं, इंडस्ट्री चालू करते हैं। इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा है, फिर उसमें आई फाउंड आउट कि वोल्टास इज इनटू रिटेल स्टफ, मतलब रिटेल में ये सिर्फ घर और इसमें चलता है, बट ब्लू स्टार इज इनटू तुम्हारा इंडस्ट्रियल एज वेल एज होम। तो कितना परसेंट इंडस्ट्री से, कितना परसेंट, बिकॉज इंडस्ट्रियल हम बोल रहे हैं डार्क स्टोर जो बढ़ रहे हैं, तो कितने बढ़ रहे हैं डार्क स्टोर, क्या रेट से बढ़ रहे हैं, कितना कितना कैपेसिटी ऑफ एसीज विल बी रिक्वायर्ड इन डार्क स्टोर्स, अप्रोक्सीमेट डेटा। यस, You यस। talk about all those data, then come on to ACs. फिर you talk about Voltas, Whirlpool, Blue Star, जो भी जितने भी कंपनी है, Hitachi and all, and then you come up कि सर ये सब कंपनी से सबसे ज्यादा शेयर आता है रिटेल से, बट ब्लू स्टार का, और ब्लू स्टार का वहां से भी आता है, तुम्हारे इंडस्ट्रियल से भी आता है। ओके, तो इंडस्ट्रियल से आता है, तो ऑब्वियसली सर ब्लू स्टार इज द वन टू बी लुक्ड एट फ्रॉम द ग्रोथ परस्पेक्टिव। करेक्ट। तो ये क्या हुआ, मैंने ओके। इंडस्ट्री की बेसिक बात की ना, मैंने क्या बात की, नॉर्मल है ना, कि ऐसा ऐसा सर गर्मी बढ़ रही है। तो गर्मी बढ़ रही है तो ये हमको समझ रहा है, तो ऐसा इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें चलती है, यू नीड टू सर, अंडरस्टैंड किया सर। ओके, इफ आई एम कवरिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर, मतलब स्पेसिफिकली पैसेंजर व्हीकल्स, फोर व्हीलर और टू क्यों व्हीलर, पैसेंजर एंड व्हीकल्स आई एम, क्यों ट्रैक कर रहे हैं, वाई आर यू कवरिंग पैसेंजर? नो, नो, राइट नाउ बिकॉज आई एम अ डायरेक्ट कस्टमर ऑफ इट, मेरे को वो समझ में आता हाँ है। से ओके। आईटी फार्मा, आई डोंट अंडरस्टैंड नहीं इंडस्ट्री, सो आई एम नहीं, ओनली इट इज नॉट, कवरिंग। वन सेकंड, इट इज नॉट ओनली पैसेंजर, इट इज एंटायर ऑटोमोबाइल, गाड़ी भी, स्कूटर भी तो खरीदते हो ना तुम, बाइक भी तो खरीदते हो। हाँ, इसलिए मैंने फोर व्हीलर हाँ और टू फाइन, व्हीलर। ओके फाइन, हाँ। हाँ, दैट्स वन सेक्टर। सेकंड इज हम्म, एफएमसीजी, पर एफएमसीजी बहुत बड़ा है, तो उसमें आई एम कवरिंग पर्सनल, हाउस होल्ड केयर, फिर मतलब अपना वो टूथपेस्ट, योर पर्सनल केयर जो भी आइटम्स है। सेकंड आई एम हम्म। कवरिंग रिटेल चेन्स, मतलब ये फ्यूचर रिटेल, रिलायंस रिटेल, स्पेंसर रिटेल, उस नहीं टाइप नहीं, के। उसका तो इफ वो आई एम, बी टू बी है, दैट इज अ डिफरेंट वन। बी टू रिटेल, नहीं, नहीं, एलिमेंट सुपरमार्केट, नहीं, बट उसमें बी टू सी होगा ना, डीमार्ट के बी तो टू सी हम है, कस्टमर्स बट है। द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो अबाउट द प्रोडक्ट्स ना, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डीमार्ट, और उसमें क्या फर्क है, क्या ओके, बेचता तो है डीमार्ट। अगर पर्सनल केयर, हाउस होल्ड केयर अगर वो रखा तो। सी, यू गो टू डीमार्ट, किसके हाँ, प्रोडक्ट लेते हो तुम, एच यू एल, मैरिको, डाबर ना, करेक्ट, करेक्ट। तो यू कैन नॉट ट्रैक डीमार्ट। ओके, तो अगर डीमार्ट तो एचयूएल सिर्फ मैरी रियल को एस्टेट होगा। डायरेक्टली किया तो। हाँ तो वही करना ना, तो वही करना है, एच यू एल मैरिको हाँ, वही करना, डीमार्ट नहीं करना, समझेगा नहीं हाँ, तुमको। तो इफ आई एम ट्रैकिंग दिस पर्सनल केयर, वैसे एचयूएल मैरी को अगर कर रहा हम्म। हूँ, एंड इफ आई एम टू पिच अ स्टॉक, तो व्हाट रीजन डू आई गिव, मतलब व्हाई एम आई पिकिंग सो एंड सो स्टॉक, तो हाउ डू आई कम एट इट फ्रॉम माइक्रो एंड देन टू। फर्स्ट इज व्हाई डिड यू टॉकिंग अबाउट एफएमसीजी, वो तो बताओ पहले, तुमको समझते पता लगे, व्हाई आर यू ट्रैकिंग इट, व्हाई आर यू एज डूइंग इट। हम भी कर रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज हमको समझ रहा है, वी हैव, समझ तो बहुत सारे रिटेल भी बात करें, टूरिज्म भी है, बट आई एम स्पेसिफिकली कंसर्न अबाउट एफएमसीजी, व्हाई, हम क्या बात कर रहे हैं इतने टाइम से। नहीं सर, सो मुझे उसी में थोड़ा कंफ्यूजन है कि व्हाई आर वी कमिंग एट, मेरा एक ही है कि आई एम अ डायरेक्ट कस्टमर ऑफ इट, तो क्या पर हुआ। ओवरऑल क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे वही समझ में नहीं अरे आया। तो हम इतना इतना टाइम रोज तो बात ही कर रहे हो, क्यों, व्हाई आर वी ट्रैकिंग एफएमसीजी, सुगोश कैन यू टेल व्हाई आर वी ट्रैकिंग एफएमसीजी? Yes, sir. Because we are using the product, so we know the product pricing, industry, everything नहीं नहीं about it. नहीं नहीं हाँ, वही गाइस, आई एम, बोला। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एफएमसीजी की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो इतना दिन पढ़ तो रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो रहे हैं एफएमसीजी के, Right. And बिकॉज ऑफ द demand is also इन्फ्लेशन इज picking up. डिक्लाइनिंग, इन्फ्लेशन Rural डिक्लाइनिंग, रॉ demand pick डिमांड, और हाँ रूरल डिमांड पिकअप हो रहा है, ऊपर because से of अर्बन अर्बन डिमांड इज monsoon. ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पिक अप बिकॉज ऑफ टैक्स कट। Right. फिर कंपनी Monsoon. गोइंग इनटू प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियम में About कौन है, एचयूएल, monsoon. इतना तो पढ़ रहे हैं नील, व्हाट आर यू सेइंग कि हम नहीं कर रहे हैं, नो, नो, इतने दिन नो, से तो ये हम कर इसी रहे, बात कर रहे पर हैं। हाउ डू यू असेस डिमांड, मतलब ये कंपनी की ओर से हो रहा है, फिर कॉस्ट कॉस्ट में कम हो रहा है, पर डिमांड और कैसे बढ़ेगा, मतलब ग्रोथ, व्हाट इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो वही तो इसका बोला, डेट। प्रीमियम सेगमेंट, companies are focusing to premium segment that is growing at 30%, quick commerce is growing at 60%, क्विक कॉमर्स में सो मेजरली क्या जाता है, एफएमसीजी जाता है। सो दिस इज इनफ एज एन इन्वेस्टमेंट एज thesis। एज ऑफ नाउ तो इंडस्ट्री वाइज ना, इन्वेस्टमेंट तो बाद में फाइनेंशियल जाएगा ना उस पर, पहले तो टॉक अबाउट इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री चूज ही क्यों किया, वाई आर यू चूजिंग एफएमसीजी, ओके, इन्वेस्टमेंट इज भी वन पेज,
फिर डेटा होता है उसमें कि तुम डेटा की बात करो, वो फिर ढूंढने को टाइम लगता है। ठीक है। इन्फ्लेशन ओके। कितना था, कितना हुआ, कौन से प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन है, कौन से प्रोडक्ट यूज होता है इंडिया में। जैसे मैंने कल बोला है कि वो क्रूड ऑयल और ये सब हो रहा है, तो कितना प्राइस चेंज हुआ है, कितने कम हुआ है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल बीइंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डूइंग, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डूइंग दैट। अभी ये जो वॉर होगा इंडिया पाकिस्तान में ना, विच इज द बेनिफिशियल सेक्टर इन दिस, या कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। ये सब डेटा आया उसमें, तो डेटा ढूंढने को टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाने को टाइम नहीं लगता। फिर ऐसा ऐसा हो रहा है तो तुम जाके ढूंढो कि पहले क्रूड कितना था, अभी कितना हुआ, तब कितना हुआ था कंपनी में, अभी कितना चेंजेस हुआ है। तो अभी अगर चेंजेस होगा क्रूड में, तो हाउ विल इट इम्पैक्ट द मार्जिन ऑफ द कंपनी। तो एक्चुअली क्यों चूज किया, व्हाई नॉट यू चूज इमामी एंड व्हाई नॉट यू चूज मैरिको। तो दैट मेक्स एन इन्वेस्टमेंट थीसिस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इज फाइंडिंग सेक्टर की हम सेक्टर की क्यों ट्रैक कर रहे हैं कि ये सब हो रहा है सेक्टर में। देन यू मेक अ फाइनेंशियल ओके। मॉडल। जब तक फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनाते, जब तक तुम कंपनीज के 10 साल के नंबर्स नहीं पंच करते, क्वार्टरली ट्रैक नहीं करते, कंपनीज का ग्रोथ ट्रैक नहीं करते, कंपनी के सेगमेंट ट्रैक नहीं करते, तब तक यू कैन नॉट से एन इन्वेस्टमेंट थीसिस। ओके। ओके। वही मैं कल मैंने बोला ना, कॉन्फ्रेंस कॉल जब करते हो तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करता है ये। यस। ओके, तो हमने क्या बताया, वो लिक्विड की बात की बराबर, ये लास्ट क्लास में वी टॉक्ट अबाउट दैट लिक्विड आईवी न्यूट्रिशन बिजनेस। न्यूट्रिशन बिजनेस यस। का नेस्ले भी बोल रहा है ग्रोथ हो रहा है, एचयूएल भी बोल रहा है ग्रोथ हो रहा है, एंड हम पढ़ रहे हैं वो डाबर भी बोल रहा है कि न्यूट्रिशन बिजनेस इज ग्रोइंग। तभी सबसे बड़ा न्यूट्रिशन बिजनेस किसका है, एंड व्हाई इट इज ग्रोइंग, बिकॉज ऑफ पीपल वांटिंग टू यूज प्रीमियम प्रोडक्ट। तो ये डेटा है, तो कितना प्रीमियम है, कितना प्रीमियम सेगमेंट कितना बड़ा है, हाउ बिग इज ए प्रीमियम सेगमेंट, कितने से ग्रो हो रहा है, कौन से प्लेयर्स है इसमें, हाउ इज द अनऑर्गेनाइज प्लेयर अफेक्टिंग इट। ओके। पहले इंडस्ट्री के अज्यूमिंग यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तुमको बोला है कि एक सेगमेंट पकड़ के बात करो, एंड वो सेगमेंट शुड बी ए बिगर वन। ऐसा नहीं पता चले तुम ईवी ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स का ईवी पकड़ के बात कर रहे हो, जबकि उसका मेजर रेवेन्यू आता है जैगवार से। करेक्ट। कंपनी नहीं, का वो नहीं होना जिसका, चाहिए, हाँ। वो नहीं होना चाहिए ना, हाँ। हाँ, यस यस। तभी एचयूएल की हम बात करें तो एचयूएल का बड़ा सेगमेंट है, पता है ब्यूटी, इसके लिए हम उसकी बात कर रहे हैं। बट द अदर सेगमेंट इज नॉट ग्रोइंग। वो जो उसका बड़ा सेगमेंट जो होम केयर है, दैट इज फ्लैट। तो ऑब्वियसली एचयूएल इज नॉट अ गुड पिच करंटली। तो करेक्ट। ढूंढो ऐसा कोई कंपनी जिसका ना टॉप सब मेजर प्रोडक्ट प्रीमियम से ही आ रहा है। आई थिंक नायका का आता है ऐसा है। पर सर, अगर अभी नायका अगर कर रहे हैं, तो हम्म। एंटायर नायका इज कॉस्मेटिक्स, उतने उसके हाँ, अंदर कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स है, हाउ डू वी ट्रैक दैट? किसी तो नायका इंडिविजुअली। इज उसके खुद के प्रोडक्ट अलग है और वो बेचता अलग है ना, ऐसा है। हाँ। तो इफ यू तो से कि आई विल टेल यू, ओके आई विल टेल यू हाँ। एग्जांपल है अभी नायका, आई डोंट नो, आई एम नॉट saying, जस्ट मैं ऐसे ही बोला कि नायका का ग्रोथ होगा बिकॉज प्रीमियम सेगमेंट, मुझे नहीं पता नायका क्या करता है। हाँ। गो एंड फाइंड कि क्या करता है नायका, कहाँ से आता है। एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूटी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट ग्रोइंग, ठीक है। यस। तो एचयूएल का भी प्रीमियम सेगमेंट ग्रो हो रहा है, जो हमको समझ रहा है उसके यस। कॉन्फ्रेंस कॉल के। लेट्स से मैरी को भी, लेट्स से तुम्हारा वो इमामी भी बोल रहा है कि हमारा प्रीमियम सेगमेंट ग्रो हो रहा है, मैरी को भी बोल रहा है हमारा प्रीमियम, क्योंकि उन्होंने वो बियर्डो और वो सब लोग ने एक्वायर किया है। हाँ। वो सब सेगमेंट नायका इज ऑल्सो सेलिंग ऑन देयर पोर्टल, प्लस नायका के करेक्ट। खुद के ब्यूटी प्रोडक्ट है। यस। तो बस हो गया ना, फिर एवरीथिंग इज, यू आर टॉकिंग अबाउट नायका, करेक्ट। ओके। तो ओके। उसके लिए पहले एचयूएल मैरिको इमामी के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके तुम यस। नायका की बात करोगे, करेक्ट। ठीक है। ठीक। ओके। जब तुम वो डीमार्ट की बात करो, डीमार्ट के पहले एचयूएल, डीमार्ट से जाके तो एचयूएल का ही प्रोडक्ट लेते हो ना। अगर उनका ही हाँ। प्रोडक्ट नहीं यस। होगा तो फिर डीमार्ट करो कैसे। तो डीमार्ट, वी टू रियल, दिस आर ऑल रियल एस्टेट कंपनीज, दिस इज नॉट एफएमसीजी। इवन फॉर दैट इन नटिस्टो, शॉपर स्टॉप, नटिस्टो। शॉपर स्टॉप इज ऑल्सो एन रियल एस्टेट प्लेयर, इट इज नॉट एन फैशन प्लेयर। वहाँ पे तुम शॉपर स्टॉप में जाओगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स तुमको अलग अलग कंपनीज के मिलते हैं। शॉपर स्टॉप के ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, अभी अभी आने लग गया है, बट वो काफी मिनिमल है, करेक्ट। बट सर, कांट भी कोरिलेट कि अगर एचयूएल अच्छा कर रहा है, मैरिको अच्छा कर रहा है, ये सब कंपनियां अच्छे कर रहे हैं, और तो कैन वी नॉट ट्रांसलेट कि दैट मीन्स और डीमार्ट विल आल्सो डू वेल, क्योंकि उनके सेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब डीमार्ट में ज्यादा सेल्स बढ़ेंगे ना उनके। तो उसी क्या तो होता है प्रॉब्लम, डीमार्ट में तुमको क्या पता, और भी कितने सारे प्रोडक्ट है ना, वो पता नहीं, इसके लिए आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, हाँ, पता नहीं कितने हैं, नेक्स्ट। ऐसा है। एचयूएल का कितना बेचता है, कैन यू टेल। एचयूएल ग्रो हो रहा है, मैं बोलो डीमार्ट का है ही नहीं एचयूएल में, तो हो दैट इज सकता है द ना ऐसा। प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे आई विल टॉकिंग अबाउट करेक्ट। नायका। अभी अगर लेट्स से एचयूएल का ब्यूटी सेगमेंट ग्रो हो रहा है, इट इज नॉट देयर ऑन नायका के प्रोडक्ट्स में, तो फिर क्या फायदा नायका। यू कैन नॉट से कि नायका इज अ ओके। गुड गुड कंपनी, या। तो अगर ये सब पता, तो पता होना चाहिए वो सब क्या हो रहा है, डीमार्ट कितना बेचता है, नायका का कितना होता है। तो वो डेटा नहीं मिलता है, इसके लिए अवॉइड ऑल दोस कंपनी। बट अगर बात करनी है नायका की, तो प्रीमियम सेगमेंट की बात करो, नायका का प्रीमियम सेगमेंट से कितना आता है, प्रीमियम सेगमेंट कितने से ग्रो हो रहा है, नायका खुद के भी प्रोडक्ट्स है। तो आई फील इट्स अ गुड कंपनी टू डू। देन यू कम टू द फाइनेंशियल।
तो नायका का कॉम्पिटिटर कौन है? नायका ही क्यों ग्रो होगा? व्हाट इफ इट हिट बाय कंपटीशन? व्हाट इफ अमेजोन कम्स इनटू दिस? वो बात कर रही है कि अमेजोन नहीं, आएगा इसमें, अब ई वो तो कॉमर्स में। हुआ है ना, नायका हाँ, को कंपटीशन, ये जूडियो का ब्यूटी एक सेगमेंट जूडियो निकाला है का है, उन्होंने। करेक्ट, वो सब है। तो ओके। इसके लिए टॉक अबाउट अ टॉपिक एंड सी किसका मेजरली पोर्टफोलियो है। अभी जैसे फॉर मी आई विल से टुडे इज द टॉप पेज इज टीवीएस, बिकॉज उसका टू व्हीलर सेगमेंट, हमने तभी बात की थी कि उसका टू व्हीलर सेगमेंट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। यस। एंड मेजरली 45% था, अगर तुम हिस्टोरिकल देखो 20% स्कूटर से आने का, अभी वही 30% पे आ गया। दैट्स अ वेरी स्कूटर गुड ग्रोथ। अब इट्स वेरी गुड ग्रो, एंड मोटरसाइकिल का कम हुआ है। एंड क्यों हो रहा है? एंड हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में भी टू व्हीलर्स का सेल बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इजी यूज, वुमेन वर्कफोर्स गेटिंग इनटू नो सॉरी वुमेन गेटिंग इनटू द वर्कफोर्स। तो वो लोग वुमेन डजंट ड्राइव अ बाइक, तो बाइक का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। बाइक में किसका ग्रोथ हो रहा है? तो प्रीमियम सेगमेंट का। प्रीमियम में करेक्ट। कौन है अभी बाइक्स में, इफ आई टॉक अबाउट? प्रीमियम प्रीमियम मतलब वो बीएमडब्ल्यू वो टाइप के होंगे नहीं, पर। वो नहीं, प्रीमियम नहीं, वो तो लग्जरी हो गए। रॉयल प्रीमियम एनफील्ड सेगमेंट, अच्छा। आइशर। हाँ, रॉयल एनफील्ड एंड ऑफ कोर्स इवन हाँ, बजाज। यस। बजाज भी यस। है। तो वो टाइम पे तुम हीरो लेके नहीं आ सकते कि सर हीरो लो, ये भी टू नहीं, व्हीलर्स हाँ। में। नहीं, ठीक है, नहीं। वो मास में। करेक्ट। तो दिस इज हाउ टू टॉक, टेक अ टॉपिक एंड टॉक ऑन दैट टॉपिक, एंड फिर कंपनीज ट्रैक करो उसमें। ऐसा है। तो दिस इज हाउ द इंडस स्टॉक पिक। तो इंडस्ट्री वाइड अगर मैंने ऐसा किया कि समझो जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, इनके का रीच जितना बढ़ रहा है उतने हम्म, डिलीवरी व्हीकल्स भी बढ़ेंगे इस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वो भी एक है, वो भी एक पॉइंट है फॉर टू व्हीलर्स इंक्रीज इन इंडिया। वही ओके। हुआ है, वही हुआ है, एक्चुअली हुआ वही है। हाँ। वही हो रहा है। ठीक जैसे है, मैंने सो बोला यू डार्क सेइंग। स्टोर्स का एसी है। ओके, सो यू सेइंग इंडस्ट्री वाइड पहले फाइंड द रीजन, देन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मॉडल्स एंड डेटा, डेटा, हाँ, देन नो डेटा, विच स्टॉक टू पिच। स्टॉक टू पिच। पहले इंडस्ट्री का डेटा मिला, तुमको स्टॉक पे कोई आए, तुमको और ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि कौन से स्टॉक की बात कर रहे हो तुम। फॉर ओके। एग्जाम्पल अभी चलो हम इसकी बात करते हैं, तुम्हारे ये डार्क स्टोर्स की, ठीक है। एज यू सेड द हाँ, रीच इज इंक्रीजिंग। तुमको पता है वो जोमेटो ने वो कमर्शियल और बल्क ऑर्डर्स भी चालू किए। उस दिन हमने बात की थी थ्री व्हीलर्स ईवी की, थ्री व्हीलर्स ईवी हाँ। सेल्स आर इंक्रीजिंग। करेक्ट, यस। थ्री व्हीलर अच्छा, कौन से सेल्स थे? बल्क। हाँ, वो ओके। कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स थे, नॉट द रिक्शा वाले सेल्स थे। मतलब टेम्पो। टेम्पो ट्रैवलर्स, हाँ, हाँ। महिंद्रा के। वो अनुपम ने भी बोला था क्लास में कि करेक्ट, ना यस। उसके, हाँ, उसके सेल्स सर हमारे इधर दिख रहा है, वो अभी सब रिक्शा और ये सब उसी में लेके आते हैं। तो क्वाइट प्रोबेबली वो जो सेल्स हो रहा है, तो लॉजिस्टिक इंडिया में बढ़ रहा है। यस। लॉजिस्टिक बढ़ रहा है, तो वो भी एक पार्ट है, तो महिंद्रा भी आया उसमें। अभी सब ऑब्वियसली अभी अभी इफ यू गो एंड पिच महिंद्रा ऑन दैट पेज, तो लगे पागल है महिंद्रा, तो ट्रैक्टर्स बना रहा है, तुम कहाँ पे थ्री व्हीलर्स की बात करते हो? हाँ, क्योंकि करेक्ट। मेजर बिजनेस कहाँ से आता है मेजर वो बिजनेस तो इम्पोर्टेंट वहां से थोड़ी आता है उसका, महिंद्रा का। है। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बारे में बात करने मतलब नहीं महिंद्रा के बारे में, ओके। टेकिंग दैट टॉपिक। बट महिंद्रा ट्रैक करना चाहिए सर, महिंद्रा भी, अगर जैसे अतुल ऑटो है, अतुल ऑटो इज इनटू थ्री व्हीलर, अज्यूमिंग हाँ। वही था, अतुल ऑटो इज इनटू दिस थ्री व्हीलर, वो है थ्री व्हीलर ईवी में। तो महिंद्रा का क्या कंपटीशन है वहाँ पे, वो भी तो पता होना चाहिए तुमको कि सर अतुल ऑटो तो ग्रो हो रहा है, बट महिंद्रा उसका बड़ा कंपटीशन है वहाँ पे। दो उसका मेजरली पोर्शन वहाँ से नहीं आता, बट महिंद्रा इज अ कॉम्पिटिटर। ओके। ओके। अभी ये ई व्हीलर ई बसेस की बात की, तो वेल इंस्टेड ऑफ कि ई व्हीलर्स ग्रोथ हो रहा है, तो ओलेक्ट्रा एंड जेबीएम का ग्रोथ हो रहा है। दे आर करेक्ट। स्पेसिफिकली इनटू ई व्हीलर। पर टाटा मोटर्स, और ये भी तो है, टाटा मोटर्स एंड हाँ, ये ये बहुत बड़े अशोक, ये भी तो है। कॉम्पिटिटर्स। ये भी तो है उसके कॉम्पिटिटर्स, भले उसका टाटा मोटर्स का मेजर रेवेन्यू इलेक्ट्रिक से नहीं आता, बट उसको तो कम्पीट करा ना ओलेक्ट्रा को। हाँ, क्योंकि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस का मार्केट शेयर निकाला है तो किसका बड़ा है वो इम्पोर्टेंट है। वो पता, हाँ, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं पता, तो वो हो गया इंडस्ट्री जो तुमने। तो उसके लिए बाकी के इंडस्ट्री भी ट्रैक करने पड़ते हैं, बाकी कंपनी। तो ओके। इन्वेस्टमेंट थीसिस इज लाइक 10-15 पेजेस मोर रिपोर्ट विद डेटा, विद हाँ, यस, डेटा। सपोर्टिंग चाहिए, हाँ। सपोर्टिंग हर एक को, बड़ा बड़ा है तो क्यों बड़ा है, कम हुआ है तो क्यों कम है। दिस इज हाउ द ओके। रिसर्च वर्क, दिस इज हाउ द इन्वेस्टमेंट है। तो उसके लिए पता ना, तुमको सब होने चाहिए। टिल यू डोंट हैव द मॉडल्स, टिल यू डोंट हैव द कॉन्फ्रेंस कॉल, टिल यू डोंट हैव द इंडस्ट्री डेटा, तब तक तुम ऐसा में सेशन लेके कुछ फायदा ही नहीं इसका। Correct? तो ओके, वो हम ही थैंक यू करेंगे, सर। हम जो बात करते ना वीवर द पहले के जो स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं, वो लोग ने एचयूएल लेके ही बात की थी पूरे इंडस्ट्री में, कि तब एचयूएल का ग्रोथ हो रहा था एंड स्टॉक मूवमेंट भी हो रहा था। यू कैन टेल विथ योर कि सर स्टॉक मूवमेंट हो रहा है एचयूएल में, क्योंकि रूरल सेगमेंट वाज ग्रोइंग, वो था। अभी नहीं लग रहा है, अभी हो गया, अभी अर्बन ग्रो हो रहा है। तो अभी अर्बन ग्रोथ, अर्बन में कौन है स्पेसिफिक? और भी है ना, वहाँ ओनली एचयूएल। इमा में भी है, इमा सॉरी इमा में नहीं, मैरिको भी है, डाबर भी है। टाटा हमने बात की, अभी टाटा कंज्यूमर्स क्यों लिया हमने उस दिन, टॉकिंग अबाउट टाटा कंज्यूमर्स। अच्छा, करेक्ट। कि एचयूएल का कोर पोर्टफोलियो ग्रो ही नहीं हो रहा है, टाटा कंज्यूमर इज ग्रोइंग।
कितने Yes. 41 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए उसने, सेम सेगमेंट है, ऐसा है, सही हो। Okay. Okay. ठीक है, thank you very much. ओके गाइस, आई थिंक एनीवन एल्स, किसी को बोलना Sir, है? I have one doubt. या So I was listening to TVS call yesterday, and हम्म analysts mentioned that in rural areas, हम्म two-wheelers are often accompanied by three riders. हम्म He suggested that this is why lower CC bikes are not selling as well. So I was thinking that he did make a valid point, but I'm wondering that if it's appropriate to base analysis on such illegal practices, like because we can't include in it official report. करेक्ट, हाँ करेक्ट, ये इलीगल है। तो फिर उस बेसिस पे एनालिसिस करना सर वो नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो एक क्या है, इंडिया का फ्लॉ है कि ऐसा अलाउड कर रहे हैं इंडिया में, बट ऑब्वियसली वो बेसिस पे एनालिसिस नहीं करना तुमको। ओके। पर हायर, बट ये तो हायर सीसी बाइक आर देयर इन रूरल, क्योंकि वहाँ पे रास्ते भी तो खराब होते हैं ना। ये सर बिकॉज सर इन टीवीएस डेटा में भी ऐसा दिखता है कि उन्होंने जब वो मोपेड निकाला था हम्म वो तब इतना नहीं बिका था, लेकिन जब उन्होंने एक्सेल सुपर करके निकाला हायर सीसी हम्म, वर्जन, वो उसका डिमांड बहुत है, अभी भी है, मतलब ऐसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो बस ये ये सब वो इसके लिए वो घूमना भी होता है, हम जब घूमने जाते हो तो आसपास देखना होता है क्या चल रहा है। तुम गाँव जाते हो तुम्हारे, देख लेना आसपास क्या हो रहा है, कौन से बाइक दिख रहे हैं। ओके। पर फाइनेंस सेक्टर ट्रैक नहीं, फाइनेंस सेक्टर तो गौरव नहीं ट्रैक करना, नहीं समझता किसको लोन देता है क्या होता है, एंड फाइनेंस हैज रिक्वायर्ड स्पेशल काइंड ऑफ स्किल्स फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरा भी तुमको फाइनेंस उसके ये भी पता होना चाहिए। तो फाइनेंस सेक्टर इज स्पेसिफिकली केप्ट फॉर सीएस, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है उसके बारे में, एंड डिफिकल्ट है पहली बात तो ट्रैक करना, ऐसा। टू अंडरस्टैंड फाइनेंस सेक्टर यू शुड अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, so that's very big. Okay, okay guys, a good difference, so you got it how to talk about thesis। तो हमको थीसिस मतलब भी जो रिसर्च करना है, ये प्रोसेस तय करना है कि कल हमको एक स्टॉक ढूंढना है, 3 महीने में हमको एक हाथ नहीं, एक एक सेक्टर में एक एक स्टॉक ढूंढना है कि ये कौन सा स्टॉक अच्छा है। दैट इज वाई वी आर नाउ रीडिंग द कॉन्फ्रेंस कॉल, कि जब कॉन्फ्रेंस कॉल रीड करके होगा, लिख के होगा उसके बारे में, तब विल अंडरस्टैंड कि अरे हाँ ये सब कुछ हो रहा है ये सब चीज़ों में। लेट्स ट्रैक द कंपनीज नाउ, जो एक्चुअल में नहीं हो रहा है, बट इमामी में हो रहा है, या सॉरी टाटा कंज्यूमर में हो रहा है। दिस वीक ऑल्सो देर आर रिजल्ट विच विल कम, मैरिको आएगा इस बार, मैरिको की हमको देखना है, सेकंड में को है मैरिको, नेक्स्ट वीक उसके बाद इमामी आएगा, तो अंडरस्टैंड क्या क्या हो रहा है कंपनी, ब्रिटेन में भी आएगा बीच में। क्या रजनी, यू टॉकिंग, वांट टू से समथिंग? Oh, no, actually, I just want to know, is there any recording of the conference call is available हाँ anywhere? हाँ, है ना, पता तो, गूगल करो मिल जाएगा, गूगल है, बता तो था मैंने वो कॉल पे। यू हैव गूगल, यस्टरडे आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, टॉक इंडिया करके है क्या, उस पर भी रिकॉर्डिंग मिल जाते हैं विद ट्रांसक्रिप्ट, फॉरगेट अबाउट रिकॉर्डिंग, यू गेट विद ट्रांसक्रिप्ट। जस्ट सी यस्टरडे, तुम नहीं थे क्या संडे को? Yesterday I was on call, but day before yesterday, नहीं I संडे was को, संडे। no, no, actually I was traveling. या So, जस्ट सी द सेशन, सीधा वहाँ पे मैंने बताया कहाँ पे क्या क्या मिलता है। okay, okay, sure. ओके, Thank you. Thank you. एंड हाउ टू राइट ऑल्सो आई हैव टोल्ड कि कैसे लिखना है वो, जस्ट गो Yep. थ्रू द सेशन। Okay, okay, I will refer that. Thank you. ओके, So I have a report on index of industrial production. या सॉरी, हाँ सॉरी देव, आई मिस्ड इट, या गो अहेड सॉरी। Yeah, yeah. So actually, this report was by Ministry of Statistics. It was saying about that the production have declined over year on year. Actually, the growth of production have declined, and in within the IIP, there are multiple sectors, and I have chosen some sectors which have some trend reversal. Basically, the electrical equipment manufacturing have a significant 22% growth in production. And another one is the leather industry is continuously on decline for last 3 years. And also लेदर, the लेदर यूज है ना? yes sir, leather and ओके related products. And also food production industry is also growth is declining. ओके, so what is the output and what is your conclusion? So we can say that in these sectors, maybe there is a
inventory pile up or there's less demand in the production. That's why production is declining. Okay. 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 Fine. I think electric is growing, na, in India. Correct. Yes, sir. Electric segment. Okay. Fair. Okay. Okay, guys. Good discussion today. Nothing from how to look at the stock. तो वही हिसाब से research करना. That is why we are doing this morning call. कि रोज न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आ रहा है and we have to grab those and keep it with us. Grab those data, capture those and keep it with us. कि कल कोई इंटरव्यू में पूछे डेटा के बारे में, सर ये डेटा है हमारे पास, कैसे आया, यू विल नॉट फाइंड एनी एनुअल रिपोर्ट, सर मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ, वहां से मुझे ये मिला. That makes a different I will say level of different level of Impact. attention or maybe impact, हाँ, different level of impact on the interviewer. कि अरे इसने ये भी पढ़ा, इसको कहाँ से मिला ये सब डेटा. As a fresher they don't expect all those things. I'll tell you, yesterday there is a guy who is given an interview in Acuity. उसका यही हुआ है ना, सेम क्वेश्चंस था कि अरे they were not expecting me to say such kind of things in interview. कि जब उसको पूछा गया ना टेल मी अ स्टॉक पिक, तो ये एचयूएल ही बात की उसने, बिकॉज वी आर टॉकिंग एचयूएल फ्रॉम लास्ट 2-3 months. तो यार इतना सब डेटा तुमको कैसे पता है? तो सेम थिंग सर, आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, आई वाज रीडिंग न्यूज़ आर्टिकल्स. देखो वो जो आर्टिकल लिखा है सर, उसमें भी मेरा डेटा मैंने डाला है. तो व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज, तुम भी वो डेटा कलेक्ट करके जा सकते हो इंटरव्यूज में. दिस इज व्हाई आई टेल यू, राइट इट ऑन लिंक्डइन. तुम्हारे पास वो होना चाहिए. वर्ड पे लिखोगे तो क्या आता है, वर्ड वो फाइल डिलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया. लिंक्डइन पे हमेशा रहेगा, लाइफ लॉन्ग. द पर्पज ऑफ राइटिंग इट. ओके, फाइन. Okay, guys. Okay. See you tomorrow. Have a nice day. Bye. Bye, guys. Ram, you can come to the office, huh, if you want.